one easy method of multiplication, and that is base method. We know 7 multiplied by 9 is equal to 63 because we know table. Let us solve in base method. Example 7 multiplied by 9. 7 और 9 किसके करीब है? 10. तो हमारा बेस हुआ 10. 10 में कितने जीरो है? 1. इधर एक स्पेस छोड़िए. 7 और 9 को 10 तक जाने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? 7 को 3, राइट -3, and 9 को राइट -1. We have to multiply 3 and 1. 3 ones are 3. 7 minus 1 is 6 or 9 minus 3 is 6. Your answer will come same and your answer is 63. Next example 12 multiplied by 14. 12 और 14 किसके करीब है? 10. तो हमारा बेस हुआ 10. 10 में कितने जीरो है? 1. इधर एक स्पेस छोड़िए. 12 और 14 10 से कितने ज्यादा है? 12 लिखिए +2 और 14 लिखिए +4. Then multiply 4 and 2. 4 2s are 8. Now 12 plus 4 is equal to 16 or 14 plus 2 is 16. Your answer will be same and your answer is 168. Now we shall multiply big numbers. Example 99 multiplied by 98. 99 और 98 किसके करीब है? 100. तो हमारा बेस है 100. 100 में कितने जीरो है? दो जगह छोड़िए. 99 और 98 को 100 तक जाने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? 99 को 1, राइट -1, and 98 को 2, राइट -2. Then multiply 2 and 1. 2 ones are 2. Here space is 1, right 0. Now 99 minus 2 is 97 or 98 minus 1 is 97 and your answer is 9702. One more example 105 multiplied by 106. 105 and 106 किसके करीब है? 100. 100 हमारा बेस है. 100 में कितने जीरो है? दो जगह छोड़िए. 105 100 से कितने ज्यादा है? 5, राइट +5 and 106 100 से कितना ज्यादा है? 6, राइट +6 and then multiply 5 and 6. 5 multiplied by 6 is equal to 30. Now 105 plus 6 is 111 or 106 plus 5 is 111. Your answer is 11130. Similarly, we can multiply big numbers with base of 1000, 10,000, lakh, etc. I hope you enjoyed this video. If you like it, share and subscribe our channel. Thank you.